Good morning family, welcome back to the channel. I hope all of you are doing absolutely safe and fine. It's the 21st of July and I'm out here today to go ahead and get my second servicing done on the Ford Freestyle. So approximately the second servicing comes in at around 10,000 kilometers. Alright, but then I'm doing it at around 7,700 kilometers something, because I was not able to touch the 10k mark thanks to the wonderful lockdown that we had. So yeah, anyways, it's time for me to go ahead and get the servicing done. So I thought me as well get it done and finish off with it, and I can explain to you guys as well what happens in the second servicing, how much does it cost and all of that. So before we get into that, guys, look at the weather. The weather's absolutely brilliant, marvelous. It's kind of drizzling in Bangalore. It's around 9:23 in the morning. It's a wonderful weather actually to go out on a nice long drive. Yeah, so I'm heading to the service center right now, and I'll try and show you guys as much as the process that's happening. Okay, I know I spoke to the service guy. He told me that usually they don't allow recording. All right guys, so you all would have heard on multiple threads that Ford is planning to exit India. I've seen a lot of online platforms and seen a lot of videos as well, very good reviewers, and I did get to know that these are just speculations. Nothing of that is confirmed by Ford as of now. All right, so what happened is what's the actual matter is that Ford has two plants, all right, manufacturing plants, one in Chennai and one in Gujarat. Ford is not being able to utilize these plants to its maximum resources. Only 50% of it is being used, due to which that's incurring a lot of expenses for Ford. That's why they wanted to go ahead and share their plant with another manufacturer. So they were in talk with Mahindra, and I think the contract was already signed, but then Mahindra called it off for whatsoever reason, not sure. And then they spoke to MG. MG declined it. I heard Citroen is still in talks, but nothing is confirmed, and they spoke to Ola as well. So not sure what's happening, guys. In case this is stopping you from picking up one of Ford's vehicle, I really think that you shouldn't stop from picking up Ford's vehicle, because Ford is a humongous manufacturer in India. It has sold, I think, loads and loads and loads of units in lakhs. So I don't think they're gonna leave their customers so easily, and even if they do, well, we can't do much, but definitely their service centers would be there, because that's the source for revenue. And I think people should choose quality over quantity and features and mileage and all of that, because Ford, that's exactly what Ford offers you, premium quality. Not sure, let's hope for the best, fingers crossed, to see what happens. Anyways, keeping all of that aside, I thought I'll just speak to you about it. I'm here, you can see, at GSB Ford, which is in Hausa Road, and his name is Nishan, and he's one of the service managers in Ford. I usually come to him only. He's a very nice guy, and he's very kind to always answer my queries and stuff. So I'll just check with him what's happening today in the second service, and we'll take it from there. Nishan ji, क्या आप 2 मिनट टाइम दे सकते हो? थैंक यू निशान जी। निशान जी, आज क्या क्या होने वाला है सेकंड सर्विस में, आप थोड़ा बताएंगे प्लीज? सर, आपका जो सेकंड सर्विस होता है, ओके, तो इसमें आपको पहला जो इंजन का ऑयल चेंज होता है। ओके, जैसे कि जो पहला सर्विस होता है ना, वो खाली चेकअप होता है। ओके, परचेस डेट से जो 3 मंथ्स होते हैं ना, परचेस डेट से, Yes. तो वो खाली चेकअप हो गया। ओके, तो अभी जो हो रहा है, जो 1 साल का सर्विस, Okay. 1 ईयर और 10,000 विच वाज अर्लियर। ओके, तो अभी आपको पूरा का पूरा इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट होगा। Okay. 4 लीटर का इंजन आएगा, ओके, ऑयल फिल्टर हो जाएगा। तो ये सब आपको टॉपअप होता है, जैसे कि Okay. कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड ओके, और वॉशर शैम्पू होते हैं इसमें। ओके, तो ये वाइपर का हम लोग टॉपअप करेंगे। Okay. फ्लूइड और शैम्पू होता है, वो ओके, डालेंगे। ओके, तो इसके अलावा जैसे कि जो एयर फिल्टर होता है, ये हाँ। क्लीनिंग होता है। ओके,
ये नेक्स्ट शेड्यूल में आपको रिप्लेसमेंट आएगा। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। इंजन कंपार्टमेंट की क्लीनिंग होता है, Okay. AC फिल्टर, सॉरी एयर फिल्टर, ओके उसके बाद एसी फिल्टर अंदर आता है ओके ग्लो बॉक्स में, ओके, तो वो क्लीनिंग। वो भी क्लीनिंग करना पड़ेगा। उसके बाद जो पूरा का जैसे कि आपका जो चारों टायर का हम लोग टायर करेंगे, करेक्ट, तो उसके बाद ब्रेक चेकअप करेंगे, ब्रेक क्लीनिंग करेंगे। ओके आगे वाला ब्रेक पैड पे थोड़ा वो एम्ब्री वेपर मारते हैं ना, हाँ, तो हम लोग थिकनेस का, क्योंकि वो अभी मतलब रन हो गया तो Correct. गारंटर होता है, करेक्ट, तो मैच करने के लिए थोड़ा एम्ब्री वेपर लगा के हम लोग फिट करेंगे। ओके तो पीछे का जो ब्रेक शू होता है ना, वो हम Okay. लोग क्लीन करते हैं, ओके फिर उसका एडजस्टमेंट होता है ओके ब्रेक शू का, ओके तो वो भी आपको अभी आज पूरा हो जाएगा थोड़ी देर में। तो बम्पर टू बम्पर चेकअप होता है, ओके, फ्रंट टू रेयर, हाँ हाँ, जैसे कि इलेक्ट्रिक आइटम, हेडलाइट का, वायरिंग, फेंडर का अंदर का ABS का, ओके और उसके बाद स्टीयरिंग कंट्रोल, Okay. तो उसका जो सिस्टम वगैरह है, सॉफ्टवेयर अपडेशन होता है, ओके सीट, उसका जो बोल्ट नट होता है, Okay. उसका चेकअप, तो पीछे तक आपका सेंसर, Okay. रियर कैमरा का सब A to Z चेकअप होता है। ओके तो ओके मेन आपका अभी ऑयल चेंज का Okay. इसमें होता है। मेन ऑयल चेंज है। और इसमें ये व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी हो जाता है निशान जी? हाँ, ये आपको- 10,000 किलोमीटर में? हो जाता है, आपको ऑप्शन होता है, ओके, कुछ कस्टमर्स मतलब बाहर भी कर देते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एक्चुअली इसका जो एडवांटेज है, अगर आप कंपनी में करेगा ओके तो आपको एक वारंटी भी, मतलब अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया, जैसे कि सस्पेंशन में या टायर में कुछ बस्ट हो गया, ओके, तो फोर्ड वाला पूछेगा कि हाँ कस्टमर इधर किया कि नहीं। करेक्ट, तो ओके अगर आप इधर करेगा तो आपका जो वारंटी होता है ना, हाँ, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ओके फाइन, हाँ ओके सर कस्टमर तो इधर ही किया अलार्म वाला से, ओके तो कुछ इशू होता है तो वारंटी बनेगा। ओके। और क्या चार्ज है इधर निशान जी, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग का? का 650 कुछ होता है, ओके, और अलाइनमेंट का 700 कुछ होता है, 700 कुछ तो होता है। टोटल आपको 1500 तक आपको अलाइनमेंट बैलेंसिंग जाएगा। ओके, इतना है, ओके फाइन, इतना आएगा। ठीक है, तो- ओके निशान जी, हाँ, तो आपको मतलब पूरा का पूरा चेकअप आएगा, जैसे कि वाइपर का होगा, यस, सब कुछ उसमें हम लोग A to Z चेक करेंगे, क्योंकि ये एक साल का सर्विस होता है, ओके, बीच में आपको सर्विस नहीं आएगा ना। Correct, तो हम लोग correct. एक साथ पूरा चेक करेंगे, पूरा एक साथ। हाँ, बस वही है। ओके निशान जी, तो ये जो इंजन ऑयल अभी आज डालने वाले हो आप लोग, ये क्या सेमी सिंथेटिक होने वाला है? हाँ, जो Okay. फोर्ड रेकमेंड होता है सेमी सिंथेटिक होता है, Okay. तो हम लोग उसमें जो कैस्ट्रोल का जो है Okay, ऑयल, हाँ, हाँ, तो हाँ। हम लोग डाल रहे हैं अभी। ओके ओके, कैस्ट्रॉल का? कैस्ट्रोल का टाइप ओके फोर्ड से ही ओके आता है, ओके, तो उसका टाइप आपको मैं बोल रहा हूँ। फाइन फाइन बस वही फाइन, है। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम आपको जो इंजन में अभी खाली बेसिक चेकअप किया, ठीक है, no जैसे कि problem. मेरा जो चेकअप होता है नॉर्मल, Alright. तो इसके बाद वर्कशॉप में। ठीक है, no problem. Thank you so much निशान जी, thanks a lot. All right guys, so as you heard from the gentleman himself, what's gonna happen today, this is it, and I'll keep you guys posted on what's gonna happen ahead. So stay tuned, enjoy the video. See what is the condition, एकदम बकवास हो गया. And this is the air filter. क्या है भैया ये? ऑयल फिल्टर। ओके, तो ये रिप्लेस होगा भैया? ठीक है सर। रिप्लेस हो जाएगा, ओके. ओवरिंग भी रिप्लेस करेगा। ओके, alright guys, they're gonna pour the engine oil, and something I just got to know. So basically in the BS4 variant, it drinks around 3.8 liters of engine oil, that's the diesel. But for BS6 it takes in around 6.5 liters. So that's the surprising thing. And also the gentleman was telling me that the oil grade is different. For BS4 it's 5W 30, and for BS6 it's 0W 30. So you can see that they're pouring the engine oil. So currently he just put 4 liters and he will top it up again with more. So this is the engine oil going in, just a noteworthy thing. So the wheel alignment and the balancing has been done. Basically, sorry, the balancing has been done, the alignment is yet to happen. So one more quick tip guys, every 5,000 kilometers go ahead and do your wheel balancing. Interchange the wheels, the front wheels go back, back wheel comes front. Reason being is because the engine is the heaviest part of the vehicle. So if your front wheels are going on taking it, same pair of wheels, your tire life would reduce. So that's why
it's always recommended to go ahead and change your wheels at every 5,000 kilometers. So the back come front and the front goes at the back, and every 10k kilometers you can do the alignment. So that's how it is. Here guys, they're topping up more engine oil. Here you go. Alright guys, so the gentleman is fixing the air filter back. He checked it and he said it's in a good condition, so he did not recommend me to go ahead and change it. He told me at 20k kilometers I can go and change it. He cleaned it right now. So what's recommended is the AC filter, because the AC filter has gone really very bad and he asked me to replace it. That is mandatory. So you can look, this is the current condition of the AC filter. It's in a very bad state, and this is how a brand new one looks. So I'm going ahead and putting the AC filter, which I think is much necessary to keep the cabin clean. And also there was a little bad odor because of the acute dust and dirt. So yeah, that's it, bro. Okay, so we are putting the wiper washer right now, so that when you use the spray, you get that fluid shampoo kind of thing. Alright guys, I hope you enjoyed the video and I hope it was informative to you, and you like the content as well. So if you guys are not following me on Instagram, go ahead and follow me on Instagram. My handle is below, and people who are following me have already got to know that I was out for my service today. That being said, do subscribe to the channel. Take care, stay safe. A lot of exciting content coming up, planning a road trip as well. So yeah, till then, bye bye, and stay home. See ya till the next video.